Tripti, all yours. So first point is Article 371D, वही special status. I think Sanjay, you can again just repeat क्या क्या कौन से states में आएंगे. ठीक है. All right. मैंने कल निमोनिक भी बनाया था लेकिन किसी को पसंद नहीं आया. तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो वो 371 ठीक के है. अंडर ही आते हैं. देन नागालैंड 371A, फिर आसाम 371B, फिर मणिपुर 371C, फिर आंध्रा 371D, और फिर आंध्रा है तो तेलंगाना ऑब्वियसली नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन. तो तेलंगाना इज 371E एंड सिक्किम इज 371F. देन मिजोरम इज 371G, अरुणाचल इज 371H, गोवा इज 371I, एंड कर्नाटका इज 371J. ठीक है. तो एक थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रखना कि नॉर्थ ईस्ट है इसके अंदर त्रिपुरा और मेघालय नहीं है. इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसमें इंक्लूडेड है. तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रखना. Right. It is Belum caves are the second longest natural caves. So this Belum caves is in the district of Kurnool in Andhra Pradesh. Kurnool, it is in the south. Correct, exactly. So that is in the southwestern part of Andhra Pradesh, Kurnool. So and this is Belum caves is second longest caves in Asia. फर्स्ट भी हमारे ही कंट्री में है. आई थिंक इन द स्टेट ऑफ मेघालय, आई गेस. वो एक बार चेक करना पड़ेगा. बट द सेकंड में ये बेलूम के आपने करनूल में बताया ना. हाँ, करनूल. करनूल करनूल में शायद बाहुबली की शूटिंग भी हुई थी. करनूल में बाहुबली की शूटिंग. ये मुझे नहीं पता. बोले बाहुबली की शूटिंग तो पूरा सेट में ही हुआ है. अच्छा 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 अच्छा. you're right actually. yes पहाड़ से टकरा था उसको. करेक्ट करेक्ट. कर्नूल हिस्ट्री में कुछ आता है क्या? कर्नूल केव्स ऐसा कुछ पढ़ा है ना आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में. कर्नूल केव्स रिमेंबर्स हिस्ट्री में शायद आता है, पता नहीं, थोड़ा याद आ रहा है. मतलब केव्स तो है यहाँ पे apart from Belum caves. So see, usually caves they are in the forest area. लेकिन यहाँ पे करनूल में in the midst of cultivable land, this is underground caves, and this goes at least 10 meters deep. So yeah, that is about it. That is about Belum caves. Then second longest coastline after Gujarat. So first is Gujarat, second is Andhra Pradesh. Then there is Satish Dhawan Space Center, Sriharikota Range, Shar in Nellore district is a satellite launching station operated by ISRO. This is self-explanatory. इस पे कोई ऐड करना चाहेगा तो कर सकते हैं. Okay. So then there is Asia's largest chili market in Guntur. Guntur Mirchi Yard is famous for this thing. Then Pulicat Lake, India's second largest brackish water lagoon. Pulicat Lake is in Nellore district. Nellore is in the southeastern. I mean, Nellore almost like it is Tamil Nadu district. Sorry. बाउंड्री है ना दोनों के बीच में. Correct. So Nellore is. और उसी के ऊपर श्रीहरिकोटा है जो है ना, वो है. Is also in Nellore district. Correct. तो उसी पुलिकट लेक का जो एक तरीके से स्टैंड बार है वो जो ये सतीश धवन सेंटर है ना. करेक्ट. ये नेलपट्टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी वहीं पे है. करेक्ट. हाँ, नेलपट्टू. So then Pulicat ना is previous question. So UPSC had asked one statement कि Pulicat Lake is spread over 2 states only. They had asked. So this was true. Okay, because it borders Tamil Nadu. And Pulicat, is it a Ramsar site? Pulicat No. is no. Okay, I think Andhra Pradesh में सिर्फ कोलेरू लेक is the Ramsar site. करेक्ट. एक मेरा और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था कि रेड चिली इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में.
पोर्टुगीज थे ना, अच्छा, पोर्चुगीज ने किया है। खाने का सारा सामान पोर्टुगीज लेके आए थे। हाँ लेकिन पोर्चुगीज। मिर्ची तो अपने पास पहले से ही थी ना। काली मिर्ची थी अपने पास, वो भर के खाते थे हम। अच्छा ठीक। आलू भी उन्होंने ही किए हैं। हाँ बोलो, इंडिया की फेवरेट डिश आलू वो भी पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, राइट। मुझे ही नहीं, हाँ। मुझे बिलीव नहीं, मुझे लगता था आलू तो हमेशा से अपना रहा होगा, लेकिन वो भी उनका एक्चुअली वो फेमस था ना, आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो अरे हाँ, हाँ, मुझे बहुत ये धक्का लगा था, शॉकिंग लगा था कि यार आलू कैसे अपना नहीं है। सही है। So then we already spoke about this. Largest shrimp exporter, largest producer of cultured shrimp and fishes, largest shrimp exporters also Andhra Pradesh. फिर Tirupateshwara temple is one of the world's most visited religious site. ये तो सबको पता है. This is in the तिरुपति Tirupati. है ना? Correct. This is in Chittoor district. शेषाचलम, राइट? Seshachalam Hills. Correct. So ये हाँ, so this is about capital. ये नया कॉन्सेप्ट आया है. दिस थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी 3 कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक जुडिशियरी एंड एक लेजिस्लेटिव कैपिटल. तो इसमें विशाखापट्टनम दे हैव टेकन एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती एज लेजिस्लेटिव एंड कर्नूल एज जुडिशियरी कैपिटल. तो बॉर्डर्ड बाय तेलंगाना इन द नॉर्थ वेस्ट, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा इन द नॉर्थ ईस्ट. हाँ, ये आप खुद देख सकते हैं. दिस ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. दीज आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स. इसमें से छोटा सा एनक्लेव है यानाम. दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी. So this the administration is not done by Andhra, it is done by Puducherry. It is in the Canada in the Godavari Delta on the eastern side of the state. So ये Godavari, जहाँ like you know there are 2 districts in Andhra Pradesh. One is East Godavari and one is West Godavari, which is one is lying on the east of Godavari, one is lying on the west of Godavari. So that way, so this Kakinada, it is in the East Godavari, east of Godavari. So I mean almost towards क्या कहते हैं, ओडिशा के नजदीक ही है. Okay, you can where Yanam is. हाँ. काकीनाडा भी पुडुचेरी का पार्ट है ना? No, Kakinada. Only Yanam is part of Puducherry. अच्छा, काकीनाडा हाईवे बना दो काकीनाडा से. वाटरवेज है या हाईवे है? वाटरवे है ना? Yes. Waterway नंबर है. 7. 4 है ना? 4 है. 4. Okay. अरे काकीनाडा का पॉइंट क्या था, एक बार वो तो समझाना एक बार वापस. अरे यानाम और काकीनाडा के बीच में 3 hours का ट्रैवल टाइम है. मतलब इट्स ऑलमोस्ट नियर यानाम. अच्छा, जहाँ पे यानाम दिख रहा है वहीं पे काकीनाडा भी होगा. इट्स 3 hours ऑफ ट्रैवल टाइम. ठीक है. फिर यानाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी लाइज इन द साउथ ऑफ काकीनाडा एंड गोदावरी डेल्टा ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट. यहाँ पे एक और ये है, काकीनाडा के पास ही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है एंड कोरिंगा मैंग्रोव्स भी है. कोरिंगा वो सेकंड लार्जेस्ट है आई थिंक आफ्टर सुंदरबंस इंडिया में. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लाइक व्हाट डू वी नीड फॉर मैंग्रोव्स? फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. So this is a perfect place. Yeah, like you know, Godavari Delta भी है ये, and it goes and mixes with the Bay of Bengal. So यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड मैंग्रोव्स. भितरकनिका नहीं है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स? नहीं, कोरिंगा है शायद. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. कोस्टल रायलसीमा. So Andhra is regions. Before separation, it was 3 regions. अभी तो 2 regions है. एक है coastal Andhra, and the other one is Rayalaseema. Rayalaseema, its name comes from Raya means Krishna Devaraya, and Seema means border. So whichever Krishna Devaraya has ruled is Rayalaseema. ठीक है. Okay.
फिर that's about it. एक रायलसीमा, ये रायलसीमा is a semi-arid and arid area. So water कम है and arid land है. So the crops that are grown are also they require less water. हाँ, और पैसा भी कम है ना. Correct. Correct. Oh, this is like North Karnataka for Andhra. Oh, So Backward region, ना drought prone region. backward, yes, drought prone region. ये प्लेट्यू रीजन, ये एक बार आप देख लेना, प्लेट्यू रीजन इन द साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट India and commonly called Rayalaseema is composed of gneiss rock. फिर shares Maidan, Mysore Plateau and Telangana Plateau, which are subdivisions of Deccan Plateau. फिर फिजियोग्राफिक, इसमें आंध्रा में ये है, it has coastal plains, eastern ghats, and Rayalaseema is the arid region. So this coastal plains are on a slope, like the eastern ghats are little elevated, and they slowly gradually come down to coastal plains. That's why the rivers are flowing from west to east, that too from northwest to southeast. So and एक बार देख लेना यहाँ पे, coastal plains to the east extend from Bay of Bengal to the mountain ranges. Eastern Ghats from the western flank form the western flank of the coastal plain. So you can see the green part, that is Eastern Ghats. उसके बाद coastal plain शुरू होगा, and then Bay of Bengal. So coastal plains are sandwiched between Eastern Ghats and Bay of Bengal. Then in the southwest, the plateau lies to the west of Eastern Ghats. That is the plateau. Plateau is what is Rayalaseema. So delta formed by the Godavari and Krishna makes the central part of the plains an area of fertile alluvial soil. So ये green region जो दिख रहा है, that is drained by Godavari and Krishna rivers. Fertile, unlike the Rayalaseema. And this fertile region, now, if you see, Green Revolution का no beneficiary भी है, this fertile alluvial region, apart from Haryana, Punjab belt. Right. फिर relief feature, these are all Eastern Ghats are a major dividing line in the state's geography. Eastern Ghats are discontinuous and individual sections have local names. Plains to the east of Eastern Ghats form the Eastern Coastal Plains. Then Kadapa Basin formed by two arching branches of Eastern rich area. Kadapa bhi is it's part of Rayalaseema. Rayalaseema has Kadapa, Kurnool, Chittoor, Anantapur. These are the 4 districts and these are the 4 arid regions. So this Kadapa Basin is rich in mineral. So if we come from north to आएगा coastal plains में ही Papikonda. So if you have heard about I'm sorry, I'm just not able to recollect the project. गोदावरी पे एक project है, आगे आएगा वो. So this Papikondalu is the place of the project. Polavaram. Correct. Polavaram. So on Godavari, there are only 2 projects, I guess. One is Polavaram and there is one more other project. So this Polavaram project is built around Papikonda. So this, what happens is when Godavari enters Andhra, so it only drains 100 kilometers of Andhra. So that is not enough. Previously when it was joined with Telangana, we had at least water flowing from there. लेकिन अभी dam construct हो गया है. So only 100 kilometers, and we need more water. So for that, they are trying to construct. This is a multi-purpose project, Polavaram. It will have hydropower, and it is used for irrigation and for drinking water as well. So this Papikonda is the site for Polavaram project.
Then उसके बाद Water है lift technology is also there. yes, that is कालेश्वरम में है ना वो तो, कालेश्वरम पोलावरम में Kaleshwaram नहीं है। lift irrigation project is Telangana's. वो हाईएस्ट है आई थिंक, वो इंडिया का कैसे वर्ल्ड का हाईएस्ट है लिफ्ट Correct. हाँ वाटर हाँ प्रोजेक्ट। वर्ल्ड का हाईएस्ट है, correct. करेक्ट, लेकिन क्या नाम आंध्रा क्या में है? भी कालेश्वरम। अच्छा, हाँ दीप्ति कुछ हाँ बोल रहे थे। आंध्रा में भी एक और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, दैट इज पट्टिसीमा। ये पोलावरम प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो तब तक दे वांट टू डाइवर्ट द वाटर, so what they are doing is from one of the canals एक पट्टिसीमा करके, so what they are trying to do is interlinking गोदावरी एंड कृष्णा थ्रू पट्टिसीमा प्रोजेक्ट। ओके, वो बाद में आएगा, आप लाइक दे हैव गिवन इन द मैप्स। सो कालेश्वरम का कल थोड़ा डिटेल में बता देना। डन, लेकिन मुझे टाइम चाहिए तेलंगाना के लिए। फिर Kaleshwaram, I think river we must know, right? Kaleshwaram is Krishna. कृष्णा रिवर, करेक्ट। So Polavaram is Godavari. तो वो पानी उठा के कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं? लिफ्ट है ना? कहाँ नहीं, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू आंध्रा, वो तेलंगाना में ही डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, इसीलिए मैं लेकिन बोला था कि कल बता देना हाँ थोड़ा डिटेल में। हाँ, कल पक्का डिटेल में बताऊंगी। सो देन फिर आएगा फिर आया है अनंतगिरी हिल्स, उसके नीचे नलमला फॉरेस्ट। नलमला वी नो रेड सैंडल, इट इज फेमस फॉर रेड सैंडलवुड। देन उसके नीचे है विनुकोंडा, देन उसके नीचे है एर्रमल्ला, नलमला एर्रमल्ला, देन सॉरी नलमला के नीचे विनुकोंडा, उसके नीचे एर्रमल्ला, then Seshachalam. The Seshachalam hills, like you said, it's in Chittoor and Tirupati. हाँ, then उसके नीचे है वेलिकोंडा, then नगरी हिल्स। ये हमको मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार देखने से पता। I think as you said, na that red Sanders. Previous year का question twice I think they asked red Sanders. करेक्ट। रेड सेंटर का मतलब कोई वो है क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन? नो, इट्स रेड सैंडर्स इज चंदन है, चंदन जो रहता है ना, हाँ चंदन का दो टाइप्स रहता है, वन इज एंड द अदर वन इज येलो कलर। तो ये वीरप्पन जो स्मगल करता था वो रेड सैंडर्स था। नहीं तो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन रहता होगा ना, आई थिंक अच्छा, नॉर्थ वो में जो हाँ नहीं सुनते इनका, तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब लाइक मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कुछ ऐसा कुछ है क्या? विजय के आई Deciduous I think. इसको deciduous बोलते हैं, dry deciduous में unique है it is I think. ठीक है। ओके, सो देन इसमें ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, ये पढ़ लिया हमने। कडपा बेसिन फॉर्म्ड बाय टू आर्चिंग ब्रांचेस ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज अ मिनरल रिच एरिया। देन कोंडलाइट, चार्नोकाइट rocks are found in the eastern ghats. Condylite and okay, next. फिर आया ड्रेनेज। सो आंध्रा रिवर सिस्टम, इसमें you can divide them into two river systems, one originating from the eastern ghats, the other rivers originating from the western ghats. western ghats से जो originate कर रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। western ghats, Godavari originates from western ghats, that is in Nasik, Triambakeshwar, and then Krishna originates from again western ghats in does anybody know where it originates? महाबलेश्वर ना, महाबलेश्वर। फिर के नीचे आएगा पेन्ना। So Penna, when it enters Andhra, it is called Penneru. Okay, so these are the three rivers originating from western ghats. एक बार पढ़ लेते हैं। Estuaries of Godavari and Krishna rivers support rich mangrove forest with fishing cats and otters as keystones. जो वो कोरिंगा मैंने बताया था ना, so कोरिंगा में we find fishing cats, that is a keystone species. Then Krishna originates in western ghats near Mahabaleshwar, empties into Bay of Bengal at Hamsala Devi in Andhra Pradesh. तो ये जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है ना, इट इज हमसला देवी कृष्णा के पास।
And Godavari is called मुझे याद नहीं है. दक्षिण गंगा ना? हाँ, the Godavari is also called Dakshina Ganga or Budi Ganga, old Budi Ganga भी Ganga. रहता है. Correct. Old Ganga because these are perennial rivers and they are old. एक So भारतपूजा रिवर का भी कभी कहते हैं ना, गंगा ऑफ साउथ. हाँ, गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं. नहीं, तो भारतपूजा है ना, उसको भी शायद कुछ ऐसा नाम से बोलते हैं. किसी को याद है क्या? कंफ्यूजन रहता है इन रिवर्स में. ठीक है. फिर गंगा, so these are like western originating, गंगा, कृष्णा एंड पेन्ना. So गंगा का ये आपने मार्क किया है, प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. So गंगा का राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज आर 5. सॉरी गंगा नहीं, गोदावरी. सॉरी गोदावरी का there are 5 right hand tributaries and there are 10 left hand tributaries. वो हम शायद बाद में देखेंगे. Then anything else? So Godavari drains Maharashtra, Telangana, enters Telangana, Chhattisgarh, Odisha, and Andhra Pradesh. So most of the Godavari river, it its drainage is in Maharashtra and Telangana itself. Very little, if you can see where it enters Andhra, that is the only area it is Pradesh. Okay, and Tungabhadra, so Krishna river, there is one more river which also is from Western Ghats, that is Tungabhadra. We all know Tungabhadra is formed by 2 rivers, Tunga and Bhadra. 2 rivers, and this Tungabhadra comes and meets Krishna. First of all, it drains through Karnataka, and it enters Andhra and drains through the border of Karnataka and Andhra and Telangana, if you can see. So it goes through the border and at a place called Sangameshwaram, that is the place where it mixes with Krishna. So that's how we call Tungabhadra the biggest tributary of Krishna. So कावेरी को भी. हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इनमें. एक्चुअली में अब हर स्टेट को अपना अपना रिवर दक्षिण गंगा है शायद. आई थिंक शायद कुछ है, देखना पड़ेगा. गोदावरी को गोदावरी को तो गंगा. नहीं, गोदावरी को तो बोलते हैं. साउथ में शायद ये जो बोल रहे हैं ना, कावेरी वगैरह को भी कहते हैं दक्षिण गंगा. कुछ डिस्टिंक्शन है तो अगर किसी को पता हो तो ग्रुप में बता देना. आई थिंक यहाँ पे तो भी टाइम लगता है. राइट, अभी तक रेज किया है पॉइंट आकांक्षा ने. हाँ. वो बोल रहे कि दे आर नॉट पेरिनियल रिवर्स. यू सेड कि कृष्णा एंड गोदावरी दे आर द पेरिनियल रिवर्स, राइट? तो वो बोलते कि दीज आर नॉट पेरिनियल रिवर्स. आई थिंक इन जनरल नॉर्दर्न रिवर्स को हम पेरिनियल बोलते हैं और सदर्न को नॉन पेरिनियल बोलते हैं. नॉन पेरिनियल, आई एम सॉरी, दे आर नॉट पेरिनियल रिवर्स, नॉन पेरिनियल. So they are dependent on, they are not available throughout the year. So इसमें so there are 4 rivers. One is Tungabhadra, Penna, Krishna, and Godavari. These are Western Ghats originating rivers. अभी इसमें छोटे छोटे रिवर्स है. वंशधारा, ऊपर से नीचे आएंगे तो वंशधारा, नागावली, एंड उसके नीचे है गुंटलकम्मा एंड पल्लेरू, मन्नेरू एंड स्वर्णमुखी. दिस पल्लेरू, मन्नेरू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन वंशधारा, नागावली, गुंटलकम्मा एंड स्वर्णमुखी, these are important. So they originate from Eastern Ghats itself. Okay. And this Penna is there, na? Penneru. हाँ. That is also previous question. Right. ये जो चित्रावती छोटा सा दिख रहा है ना, हाँ, दिस चित्रावती रिवर, वो जो केव्स के बारे में हम बात कर रहे थे, दोस केव्स वर फॉर्म्ड बाय चित्रावती रिवर बिकॉज दिस रिवर हैज फॉर्म्ड फ्लोन थ्रू गॉर्जेस ऑफ द प्लेट्यू ऑफ रायलसीमा. हाँ, Belum caves.
सो उस प्लेट्यू के बीच में से जाने के वजह से वो केव्स फॉर्म हुए अंडरग्राउंड वाटर के वजह से. So, but this is almost gone now. Chitravati river is almost gone now. So, फिर आएगा Tungabhadra. Tungabhadra formed by the confluence of Tunga river and Bhadra river in Hudli in Karnataka, flows through Karnataka during most of its course before flowing along the border between Telangana and Andhra. You can see it flows through border between Telangana and Andhra and joins Krishna river near Sangameshwaram village, Sangameshwaram. So where Tungabhadra and Krishna meets, it is called Sangameshwaram. It's in Kurnool district. Penna or Penneru river basin lies in the rain shadow region of Eastern Ghats. It's a seasonal river, rises in the Nandi Hills in Chikkaballapur district of Karnataka. Then runs north and east through the states of Karnataka and Andhra Pradesh to empty into the Bay of Bengal. Okay. So anything else? I think Tungabhadra we all know, right? For previous question, Hampi is located on Tungabhadra, World Heritage Site. Correct. So shall we go to which Doab? Okay. Doab is like confluence of two rivers, ना? कॉन्फ्लुएंस के बीच का जो ये रीजन होता है हाँ एरिया रहता है दोआब. रायचूर दोआब है क्या? हाँ रायचूर दोआब है ना जिसलिए वो विजयनगर वाला. राइट. रिवर्स कौन सी है दोनों? तुंगभद्रा एंड कृष्णा. नहीं है क्या? ठीक है. ओके. फिर आएगा नागावली. See, Nagavali and Vamshadhara are rivers originating in Odisha. Okay, originates from eastern Ghats of Kalahandi district of Odisha. Independent river with its own basin. Uplands of the river basin are hilly area. ये सब मतलब they are obviously east flowing rivers है because they have originated in the uplands of eastern Ghats. So independent river with its own basin. Uplands of river basins are hilly areas with predominantly tribal population. Then drains Odisha and Andhra Pradesh and enters Bay of Bengal near Srikakulam, Andhra Pradesh. So this is the last district which touches Odisha, no? That is Srikakulam. It is one of the northern सरकार्स में जब history में हम पढ़ रहे हैं northern सरकार्स में you will get a place called Chikakol. If you remember, we read it often in history. So that Chikakol, because they could not pronounce Srikakulam, they used to call it Chikakol. Then Vamshadhara originates in the border of Kalahandi district and Kalyan Singhpur in Raigad. See, this Raigad or Kalahandi, all these districts of Odisha are bordering Srikakulam. Okay, joins Bay of Bengal at Kalingapatnam. Then the biggest tributary of Vamshadhara is Mahendra Tanaya river. This is the major tributary. So next, इसमें कोई doubt? I think you yesterday explained now Vamshadhara, there's a dispute between Odisha and Correct. AP. Correct. So आंध्रा में सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग ही है ना, मतलब correct. There is no west flowing river. I think वो रीजन भी है ना, ये tilted है towards the eastern side, मतलब western side से उल्टा है और east side से उल्टा है. So only case when they are flowing westward is when there is a rift valley. So नर्मदा और आपने तापी देखी थी ना, तो वो एग्जाम्पल. So अभी ये डैम्स एंड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हमने देखा है. सी गोदावरी इज फ्लोइंग फ्रॉम तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश. इट एंटर्स एट अ प्लेस कॉल्ड, मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, द प्लेस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जब इट एंटर्स इमीडिएटली देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पोलावरम प्रोजेक्ट. वो अभी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, खत्म नहीं हुआ है. सो उसके बाद लॉन्ग बिफोर दिस पोलावरम project is built recently. It is started recently, but before that, to stop the waters of Godavari,
there is Sir Arthur Cotton Barrage. This was built probably in 1840s or something like that by Sir Arthur Cotton. It is also called Dhavaleshwaram Barrage. Okay, so that was the only dam which was built to stop Godavari waters. And actually, they even this Cotton Barrage is in the place called Rajahmundry. They even celebrate Sir Arthur Cotton Jayanti because they are so indebted to this guy. So that is the thing. पोलावरम के बाद आएगा सर आर्थर कॉटन बैरेज. ये पोलावरम और कृष्णा के बीच में बाद में शायद आएगा. पट्टिसीमा प्रोजेक्ट है, that is linking of गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स. सो अभी गोदावरी पे दो ही है, one is पोलावरम, the other one is पट्टिसीमा. Now we'll come to कृष्णा रिवर. उस पे बहुत सारे डैम्स बने हैं. कृष्णा रिवर पे प्रकाशम बैरेज है, then पुलिचिंतला, then नागार्जुन सागर is on Krishna river and it is Andhra and Telangana. And क्या है ना प्रकाशम? हाँ प्रकाशम एरिया है ना? हाँ, प्रकाशम is the district. हाँ, तो प्रकाशम हमने पहले भी अपने पीटी वगैरह में पढ़ा है, तो बताना प्रकाशम किस लिए फेमस है? ये मतलब इसका Prakasam barrage. sorry, हाँ He is asking maybe. Prakasam barrage. नहीं, वो तो बैरेज है, वो तो डैम लिख ही है ना सामने. और किसी In Krishna district, Prakasam barrage is there. Krishna river. वो तो आई थिंक यहाँ दिख ही रहा है ना कि वो डैम है यहाँ पे प्रकाशम. माय क्वेश्चन इज इट इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना, तो वी सॉ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन देखा था ना, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ. तो दो हमने देखे थे, एक प्रकाशम देखा था, दूसरा क्या देखा था? संगारेड्डी. रंगारेड्डी is in तेलंगाना. अच्छा, तेलंगाना. और एक और देखा था, 3 थे ना टोटल. चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं. तीनों साउथ में ही थे ना? तीनों साउथ में थे. So this Prakasham district is named after freedom fighter called Tanguturi Prakasham Pantulu. Okay, and there is Prakasham barrage and Pulichintala project also for this. These are all made on Krishna river for irrigation purpose, and they will be serving waters for Rayalaseema area. So what happens is this Pulichintala project, the right canal of Pulichintala project has been diverted to serve water Rayalaseema area. Okay, so by the way, the district through which Krishna is flowing is Krishna district. Okay, then Pulichintala, then there is Nagarjun Sagar, and there is Sri Shailam Dam. So this again, Sri Shailam Dam ka right canal, usse water divert karke they are draining the whole area of Rayalaseema. And उसके बाद पेन्ना रिवर पे एक ही प्रोजेक्ट है, that is Somasila. If you can see Somasila. So sorry, ये कृष्णा रिवर पे there is गालेरु नगरी सुजल श्रवंती GNSS, फिर है हंद्रीनिवा सुजल श्रवंती. These are all irrigation projects to give waters to Rayalaseema areas. There is Karnool Kadapa canal, then Sri Shailam right bank canal. वही मतलब वही बोल रहे हैं ना, श्री शैलम डैम के पास वहां से राइट कैनाल से वाटर्स डाइवर्ट करके दे आर गिविंग वाटर टू रायलसीमा एरिया. फिर पुलिचिंतला इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट serving irrigation needs, hydropower generation and flood control. So then is a deep gorge in the Nalamala hills between Kurnool and Mehboob Nagar districts across the Mehboob Nagar is in Telangana, across the river. Then second largest capacity working hydroelectric station in the country. Next.
So this Sir Arthur Cotton Dam, वही बोल रही थी ना, 1850 में, originally built in 1850 on the lower stretch of Godavari River before it empties into the Bay of Bengal. Rebuilt in 1970 when it was officially renamed as Sir Arthur Cotton Barrage or Godavari Barrage. Controlled floods and increased irrigated land. फिर आएगा Prakasham Dam. This is on Krishna River and constructed in 1855 and connects Krishna and Guntur districts. Apart from irrigation, it supplies water to Buckingham Canal, which is initially constructed as an inland navigation canal but was later used as irrigation water supply canal. So ये Buckingham Canal, this is almost मतलब जहाँ पे Krishna will drain into Bay of Bengal, वहाँ पे Buckingham Canal भी है. So then there is Nagarjun Sagar Dam across Krishna River at Nagarjun Sagar, which straddles the border between Guntur and Nalgonda district of Telangana. Right canal irrigates land in Guntur and Prakasham districts. Left canal contributes to Andhra Pradesh. उतना मतलब you can see it in the picture itself. फिर आएगा Polavaram Dam, under construction multi-purpose national project on the Godavari River, and accorded national project status, increases the irrigation potential. And then increases the source of Pattisima lift irrigation to transfer Godavari river water to Krishna. So that's what I was saying. Pattisima is the project which transfers river from Godavari to Krishna. Okay, next. Here, Pattisima. So this is Polavaram and this is Krishna district. So Polavaram से Prakasham Barrage तक ये बीच में yellow line है ना, that is Pattisima lift irrigation project. They have put pumps to draw water from Polavaram. Water drawn from the river Pattisima into Polavaram project, right main canal, for the benefit of farmers in the Krishna River Delta. Enable the saved water of Krishna River from the irrigation and drinking water uses of Rayalaseema region. Okay, next. We are done with this, no? Somasila is on Penna River. So there are others. Srisalem right bank canal. Mostly you will see that north से south they are trying to draw water. So वैसे ही Srisalem right bank canal से, Srisalem is on Krishna River, if you can see. वहाँ से पोतिरेड्डीपाडु तक जा रहा है water, and from there it is given to Rayalaseema. So at Srisalem right bank canal at Bankacherla, SRMC branches into 3 canals. Right side canal to feed SRBC scheme, irrigate drought prone regions of Kurnool and Kadapa. Then left canal to feed the Telugu Ganga, and middle escape channel to feed the KC canal. मतलब इतना deeply जाने की जरूरत नहीं है, I think. Or does anybody want? नहीं ठीक है, चलेगा. No. फिर आएगा soils. Then if you can see the picture, alluvial soils are on the coastal plains, and बाकी सब है all red and yellow soils. Okay, so then there is a small part of laterite soil. If you can see, that is in Nellore district, I guess. So laterite soil, and there is black soil, and that will be in the districts of Anantapur and Kadapa. So वहाँ पे cotton ज़्यादा उगता है, and this red soils. So in the coastal area, they produce mostly cashew, and हाँ, मतलब सारे coastal areas में they produce a lot of cashew nuts. Cashew nut के लिए कोई वो है क्या proper condition? I think they need more of red soil, I guess. Cashew laterite soil. हाँ, मैं भी वही सोचा था. तो आप कह रहे हो कोस्टल पे तो alluvial. वहाँ पे छोटा छोटा पॉकेट्स देखिए, लैटराइट सॉइल है. 1%, हाँ. हाँ, मतलब we use that. Rice, I think, dominates, no? Coast.
Correct. Rice is also there. There is sugarcane also. Okay. फिर है monsoon. So about 2/3 of the total rainfall is brought by southwest monsoon. Then northeast monsoon brings rain to the southern and coastal regions. So whenever there is मतलब कोई तूफान या फिर वो जो ये सब रहता है ना ओडिशा में, whenever it touches these things, it touches the coastal regions of Andhra as well. So that is and but most of the rain is west monsoon. 2/3 of the rainfall is from southwest monsoon. Then northeast monsoon brings rain to the southern and coastal regions. Then Penna River Basin, but there is Penna River Basin receives most of its water from the northeast monsoon, while other river basins get their rain from southwest monsoon. So it's a tropical monsoon climate. Okay. Next, so Andhra has 6 agroclimatic zones. And rice is major food crop and staple food of the state. Then cash crops include groundnut, pulses, oil seeds, sugarcane. ये जो groundnut, pulses and oil seeds है ना, they are more grown in the southern part. जहाँ पे water कम पड़ता है. So then sugarcane. Then second largest producer of silk in India. And first egg production, chilies. Silk में बहुत सारे silks हैं. There is Dharmaram, there is Ikat, there is Uppada and Pochampalli. So there are a lot of different kinds of silks. फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कौन सा स्टेट है? कर्नाटका हो सकता है. कर्नाटका. टिप्पू सुल्तान ने सेरिकल्चर शुरू किया था ना. हाँ सही है. सुबह देखा था ना. Right. फिर mineral belts in India. ये discovery of large quantity of natural gas in KG Basin is expected to provide rapid economic growth. There's a lot of story behind this KG Basin, because they say one of the reasons for death of ISR is because he was murdered or something. So basically, we have large natural gas in KG Basin. Even shale also, right? Shale oil reserves भी है. So then, okay, we'll just see the distribution. Srikakulam में there is granite and heavy mineral sands. Then ये मतलब ऐसा देखना है क्या डिटेल में? नहीं लार्जेस्ट ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बोल दो. विशाखापट्टनम is most industrialized district and has steel plant. It is true. मतलब बहुत सारे fertilizer companies हैं वहाँ पे, pharmaceuticals हैं, and there is BHEL, there is NTPC, there are a lot of sale भी है वहाँ पे, and there is obviously shipyard है. So it's industrialized district and has a steel plant. Then about 1/3 of India's limestone reserves, known for large exclusive deposits of barytes in the international market. Large deposits of mica is in Nellore. It is true. Mica mining mein Nellore is famous for that, and the limestones are also limestone is also found in the southern part only. Huge deposits of limestone. नेल्लोर की कुछ आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ इम्पोर्टेंस है ना शायद. पहले तो बता देना. Right. Okay. Then power plants है. ये सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट, वही मैंने बोला NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट विशाखापट्टनम में है. And Kovada is very important. It is Kovada nuclear power plant is not yet operational, लेकिन it has been stalled. I know the reason, but वहाँ power plant national nuclear power plant बनने वाला था.
Povada. American support, right? Right, correct. Then Nagarjun Sagar hydropower plant is located in Telangana. Obviously, Nagarjun Sagar is bordering Telangana and Andhra. Then ये hydroelectric power plant है Machkund में. Machkund is bordering Andhra and Orissa. So there is Machkund river which originates from Visakhapatnam and drains into Orissa, and from Orissa it drains into Bay of Bengal. Originates in Visakhapatnam and goes to Orissa. So this obviously it's perfect for hydroelectric power because it's originating from Eastern Ghats. So that is Machkund. Then there is Srisailam Dam, also hydroelectric power, and Nagarjun Sagar. So then there is Rayalaseema thermal power plant. And then there is Sri Damodaram Sanjeevaya thermal power plant. Okay. So infrastructure ports. So there is Visakhapatnam port and Gangavaram port. These are both to each other. So, but Visakhapatnam port is mostly for cargo handling, and Gangavaram port is for it's a dockyard, I guess. Okay, I'm not very sure exactly which one operates which way, but they are very near. मतलब half an hour या 1 hour का रास्ता उतना ही. So Visakhapatnam port is one of the 13 major ports of India, and Visakhapatnam port उसके नीचे आएगा Kakinada port. Then Krishnapatnam port is in Nellore. Okay, Krishnapatnam port for import and export. Shipyard for building ships at Visakhapatnam. Iron ore from Bailadila mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam. I think this Visakhapatnam port now was made only for this export purpose only. So directly from the mining site, Chhattisgarh, Odisha, they'll bring here and they'll export. This was one condition. And do you remember last, I think few years back, there was one question, Motupalli port, they had asked in culture, I think. Any idea about this port? Motupalli is in district. And Telangana, Motupalli, Telangana. No. Yeah. 8 minutes. I mean, no coastal area is there in Telangana, but something Kakatiya. Some question was there on Motupalli port. Yeah, it relates to Kakatiya. No. Motupalli is in Prakasam. So correct. You are right. What you're saying is right. Motupalli is related to Kakatiya dynasty. So it's a historic port in Chinnaganja of Prakasam district. Okay. एक क्वेश्चन भी था ना, घंटासाला करके एक सिटी था. हाँ, घंटासाला करके सिटी है. एपी में ही है ना वो? एपी में ही है. प्रीवियस ईयर. Visakhapatnam or No. Ghantasala is in Prakasam district, I guess. सब कुछ प्रकाश में है क्या? वो पोर्ट सिटी है. प्रकाशम आप अंदर बता रहे थे ना? yeah. प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट. तो पोर्ट सिटी कैसे हुआ फिर? वो अंदर से ही लेके आते हैं नाव को. That Ghantasala college something. Ghantasala is in Krishna district. ये कहाँ पे है? This is मसूलीपट्टनम, तो आपको पता है ना? मछलीपट्टनम होगा ना अपना नाम. मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम. So वहाँ से it is just 21 kilometers. This Ghantasala is. ये इनमें से मेजर पोर्ट्स है कोई? ये ना आपका विशाखापट्टनम. ठीक है. विशाखापट्टनम, गंगवरम. आगे चले. बैलाडीला माइन. हाँ, बाइलाडिला माइंस कहाँ पर है? बताओ विजय जी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ है क्या? आई एम नॉट श्योर. पूछ रहा हूँ अभी. आंध्र प्रदेश में ये होगा ना? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है. वहाँ नहीं है. या तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसा ही कुछ है. ओके, मैंने चेक किया है. कंटिन्यू करो. Okay. So then there is National Water, Aditi has already told.
ये कौन सा वाटरवे है? नेशनल वाटरवे 4. Four. Okay, so this starts from Kakinada, sorry, first Bhadrachalam and Rajahmundry. Bhadrachalam yesterday, day before yesterday, we were talking about this is a मतलब saint है एक रामदास करके. He has built a temple for Rama, saying that this is the place he has done Vanvas. So that is Bhadra. That Ramappa temple, something was there, no? Ramappa temple is in Telangana. Okay. It is related to Kakatiyas. Nothing related to this. So then, Please repeat and that it is in- place where the Panchavati place. Panchavati is in Bhadrachalam only. Panchavati is the place where Rama has done Vanvas. They say हाँ आके सीता को लेके गए थे. So Bhadrachalam is on Godavari, right? It's on Godavari, correct. Okay. So Bhadrachalam से Rajahmundry तक Godavari flows actually. So there is boating, everything. मतलब they have cargo handling भी शायद होता है इसके बीच में. Bhadrachalam, then Rajahmundry. From Rajahmundry to Kakinada, they have again waterway. From there, you can come down to Kakinada to Wazirabad. Sorry, Wazirabad is also in Telangana, I guess. And from there to Vijayawada to Pedaganjam. And अभी हम लोग we were talking about Buckingham Canal. Buckingham Canal नीचे. Yeah, and this is the oldest, मतलब British के time में, the name itself says. So उसके नीचे है that is the last, and Chennai, Narakkanam and Puducherry. So this is the waterway. The ones you have to remember from Andhra is Rajahmundry, Kakinada, Vijayawada, Pedaganjam. फिर आएगा चेन्नई. Yeah. Then infrastructure. So Golden Quadrilateral. The industrial corridors are also aligned in the same way. लेकिन हमको one more thing we have to remember is there are industrial corridors along Chennai Visakhapatnam, and there is an industrial corridor along Chennai and Bangalore also. So anything. So Howrah Chennai main line runs through the state, proposed to be upgraded into high-speed rail corridor through the Diamond Quadrilateral project of Indian Railways. I think ये CBIC Chennai Bangalore Industrial Corridor and CVIC Chennai Visakhapatnam Industrial Corridor. The ones who all are investing is, I think, Asian Development Bank. Sorry. I think we are getting the funds from Southeast. जापान से भी फंड्स मिल रहा है. जिका आई गेस है ना, जो फंड हमको मिलता है जापान से. हाँ, वो भी like investing in CBIC and CVIC. Next. फिर आया क्या? हाँ, वही the same thing. ECEC, that is Eastern Coast Economic Corridor. East Coast Economic Corridor is India's first coastal corridor, and VCIC is key part of the Eastern Coast Corridor. And VCIC is aligned with the Golden Quadrilateral and poised to play a critical role in driving India's Act East policy and Make in India campaign. वही मतलब Act East policy, इसीलिए शायद funds भी वहीं से आ रहे हैं. फिर traverses 9 districts of state of Andhra Pradesh. Coastal districts 9 है Andhra Pradesh का. And intends to complete the ongoing efforts of government of Andhra Pradesh to enhance industrial corridor and create high quality jobs. बस. Next. और कुछ देखने है क्या इसमें? आपको ही बताना पड़ेगा. हाँ. So then there are national parks and wildlife. Papikonda National Park. Papikonda तो मैंने बताया था कि जहाँ पे पोलवरम project is getting constructed, that is Papikonda. वहाँ पे एक national park भी है. And
Wildlife Sanctuary. This is in Kakinada, and it has Koringa mangroves as well. Catfish is the keystone species. उसके नीचे है कोलेरू बर्ड सैंक्चुरी, एंड देन इसके नीचे है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, देन श्री पेनिसिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट. लेकिन ये श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नियर तिरुपति इटसेल्फ. श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क. देन नेलपट्टू बर्ड सैंक्चुरी है, पुलिकाट बर्ड सैंक्चुरी है, दोनों दे आर इन नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट. फिर काउंडिन्या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुपति, जहाँ पे तिरुपति है. देन देर इज श्री लंकमल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एंड देन देर इज राजीव गांधी नेशनल एंड Gundla Brahmeshwaram Wildlife Sanctuary. So we have Gundlakamma River, which is originating from Eastern Ghats. That is the longest river in Andhra, where it is originating from Eastern Ghats. So this Gundla Brahmeshwaram is the place where that river has originated from. So Gundla Brahmeshwaram Wildlife Sanctuary is here. और पीटी उसमें एग्जाम के अंदर वो था ना, शेषाचलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, तो वो भी शायद है ना इसके अंदर. यस, टाइगर रिजर्व. वो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना? श्रीशैलम. श्रीशैलम कहना था, श्रीशैलम टाइगर. एक बार है ना, श्रीशैलम मतलब वो वहाँ सी तिरुपति एंड श्रीशैलम, इट इज लाइक 3 hours ऑफ डिस्टेंस, तो वहीं पे है. देयर इज टाइगर रिजर्व आल्सो ओवर देयर. शेषाचलम में भी टाइगर रिजर्व है क्या, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, टाइगर रिजर्व नहीं है, मतलब टाइगर्स तो होंगे, बट श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है. ठीक है, तो अभी तो टाइगर मतलब रिजर्व है एपी में. सही पे नीचे दिया है शायद, नेक्स्ट में नीचे शायद दिया है. एक सेकंड, नहीं, मुझे नहीं. वो कृष्णा और गोदावरी का लिंकिंग प्रोजेक्ट के बीच में आपने कुछ एरिया बताया था, उसका क्या नाम है? पट्टिसीमा. सीमा. पट्टिसीमा कोलेरू बर्ड सेंचुरी. राइट. फिर देन रामसार साइट्स. कोलेरू लेक इज अ रामसार वेटलैंड, एंड ये रहा श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. दिस इज इन नियर नागार्जुन सागर. देन शेषाचलम हिल्स, ये है बायोस्फीयर रिजर्व. शेषाचलम इज बायोस्फीयर. Koleru Lake, one of the largest freshwater lakes in India. Then Chenchu tribes, known to protect tigers in Nagarjuna Sagar, Srisailam Tiger Reserve. Can someone confirm this Sheshachalam Biosphere Reserve? Is it under MAB UNESCO ka, or is it only under BR? I have no idea. Only BR. Anybody? Only BR है क्या? Okay. Only BR. 11 है ना अभी, 11 है ना अभी MAB के अंदर. टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? I think 18 में से 11 कुछ है. हाँ, as you said. तो ये नहीं है ना? नहीं सर. सिक्किम के बाद कोई और भी ऐड हुआ है क्या? हुआ है शायद, पंचम मतलब MP में हुआ है शायद. हाँ करेक्ट. आई थिंक पीटी में हम डिस्कस कर रहे थे, पन्ना है ना? 12 हो गए शायद. Okay. Elephant reserves है. Rayala Elephant Reserve, Andhra Pradesh. ये you can see it is in Chittoor district. Then that is the only elephant reserve, I guess. बाकी सब ये आप देख लेना. ब्रह्मगिरी. This is actually landscape. So elephant, no, they have given corridors. So it will keep Right. more moving all across the states. Right. Wayanad, Nilgiri and Nilambur. Okay. Okay. So culture, Kuchipudi is the state dance. So Kuchipudi style of Yakshagana was conceived by Siddhendra Yogi, guided by his guru Tirthanarayana Yogi, who composed the Krishna Leela Tarangini, a kavya in Sanskrit. Dance drama performance consisting of and natya, mridangam, cymbals, veena, flute and tambura are used. इसमें कुछ यक्षगाना को थोड़ा बताना कुछ.
I don't know. I mean, I'm myself surprised कि इसमें यक्षगाना क्यों लिखा है. I mean, I think I'm not very sure about the info. नहीं, यक्षगाना तो इफ यू सी ना ब्रॉड साउथ में मिलता है, तो नथिंग अनयूजुअल. आंध्रा, एपी, कर्नाटका, केरला, इवन टीएन में यू कैन फाइंड परफॉर्मर्स. कर्नाटका होता है ना यक्षगाना. सही है, बट इफ यू वांट वन स्टेट टू पिक, दैट्स कर्नाटका, बट ओवरऑल साउथ में मिलता है. Okay. So one thing I can tell you about Kuchipudi is particularly for Kuchipudi, one kind of performances, they dance on plate and a pot, and they have like हाथ में दिया और ये सब लेके they dance. So that is one. हाँ. स्पेसिफिक टर्म भी है ना, कुछ स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए. हाँ. जंत्रा का कुछ ऐसा है क्या? I'll just तरंगम करके कुछ है ना. नहीं, लास्या और तांडवा होता है ना उसमें. Lasya Tandava is just a part of the dance. मतलब Lasya मतलब expression, and Tandava मतलब Tribhanga is there in every classical dance. Tribhanga is अभी the pose वहाँ पे है ना, that is Tribhanga, that's it, nothing else. That is there in Odissi, that is there in Kuchipudi, Bharatanatyam, everything has Tribhanga. मैं बताऊंगी. होता है, एक मंडूक होता है शायद इसमें, और एक इसमें तरंगम होता है शायद, जो प्लेट पर चलते हैं. तरंगम, is it तरंगम? एक मंडूक शब्दम होता है, एक तरंगम होता है जो फिट ऑन द एजेस ऑफ ब्रास प्लेट, और तीसरा होता है जलचित्र नृत्यम. हाँ, so this Chitra Nrityam also is the same thing. मतलब I think they make pictures while dancing out of मतलब ये हल्दी लेके हल्दी से पिक्चर बनाते हैं, या फिर अपने टो से वगैरह ये पिक्चर बनाते जाते हैं ना. Correct, फ्लोर पे. correct, absolutely right. So correct. Then Kondapalli toys, cultural icons of Andhra Pradesh. Tella Poniki wood gives the toys their unique character. So no other wood can be a replacement to make, as Tella Poniki is malleable and can be easily chiseled into desired shape. It has been granted GI tag. Then Tolu Bommalata. Tolu means leather. Okay. Tolu Bommalata means an art form of shadow puppetry, so locally known as Tolu Bommalata. So the dance of leather puppets. So puppets have jointed waist, shoulders, elbows, and knees. Puppets throw colored shadows on the screen, and themes are drawn from Ramayana and Mahabharata. और ये कोंडापल्ली टॉयज के बारे में एक है, इट इज मेड यूजिंग सॉफ्ट वुड, एंड इसमें वुडन पीस हीट किया जाता है टू मेक इट मॉइस्चर फ्री, एंड एग्जांपल है अंबारी हाथी. ओके. हाँ, अंबारी मतलब सवारी. अंबारी का मतलब हाथी के ऊपर जो छत जैसे रहता है ना, उसे अंबारी बोलते हैं. दैट इज अंबारी. फिर आएगा कल्चर बुर्रा कथा. So this is narrative folk art, has prayers, songs, poems, and jokes with regional flavor. Then Katha is narrated by chief storyteller Kathakadu by dancing and playing a musical instrument, tambura. And co-performer assists the narrator by playing small drums called gummeta. ये जो शिवा के हाथ में वो डमरू रहता है ना, that is gummeta. Okay. So and the chief guy, he'll be playing tambura. That's a small veena kind of thing. Okay, the beech mein wala that guy is playing the veena, and the other two people, they'll be playing chota damru. Okay. Then kalankari painting, hand painting or block painting, cotton textile. Ye two
include a Srikalahasti style and the Machilipatnam style of Machilipatnam style of art. Both styles have GI tags. Only natural dyes are used in Kalankari, and it involves 17 painstaking steps. So Karupur is the style of Kalamkari that developed in Tanjavur region during the Kalankari is also found in the district of Chittoor, that is in and around Tirupati. ये इंडिगो से होती है ना? क्या आदित्य? इंडिगो से होती है ना ये ब्लू कलर या जो भी? No, not really, not just ये अभी blue color दिया है, but you have red color, yellow color, and maroon. Different colors are there. Green is also there. शायद natural color से ही बनता है ये. वेजिटेबल डाइज होते हैं उससे बनाता है. Correct. Only natural dyes वही लिखा है. So I mean you can see that you can only find the natural colors. Okay. और जो पेन होता है वो बाम्बू से बनाते हैं ना? ये मुझे नहीं पता. In toys, I would like to add something. अभी PM मोदी की स्पीच में एक तो हमने ये पढ़ा ना कोंडापल्ली वाला, और एक और है एटिको पक्का. I don't know how to pronounce it. तो एक और है, मैं इसको टाइप करके भेज रही हूँ. एटिको पक्का. Anyone has idea? ग्रुप में भेज देना. एटिको पक्का टॉयज. हाँ. This is also important. Correct. They are also having GI tag. I think Etikopaka is made from bamboo, I guess. I'm not very sure. नीचे अगर मिल गया तो. कलमकारी पेंटिंग के बारे में तब तक देख लेते हैं. मतलब नेम कम्स फ्रॉम कलम. कलम मतलब पेन होता है. And the pen is used made of sharp pointed bamboo and used to regulate flow of colors. And the base is cotton fabric होता है. And color जो भी यूज होते हैं वो vegetable dyes से बनते हैं. And pen is soaked in mixture of fermented jaggery and water. And one by one these are applied, and thereafter vegetable dyes are applied. मेन सेंटर है श्रीकालाहस्ती, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश. एंड द इमेजेस आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी. और जीआई टैग दिया है, बाकी कुछ नहीं. So shall I move? Yeah. There tribes. So particularly vulnerable tribal groups in Andhra Pradesh are Bodo Gadaba and Bondo Porojo and Chenchu, Gutob Gadaba and Khond Poroja and Konda Savara and Parengi Poroja. I'm myself listening to these things first time. Okay. So, Aboriginal tribe of the central hill regions of Andhra Pradesh, traditional way of life has been based on hunting and gathering, and involved in the protection of tigers and in the Nagarjuna Sagar Srisailam tiger. So, ये चेंचू के बारे में बोल रहे हैं. There is one more thing. They tried to rehabilitate Chenchu tribes, but they could not get into mainstream, and they again went back to their own habitat. So then Konda Savaras reside in the agency areas of North Andhra, have their own dialect called Savara language. Savara village is called Gorjan, and shifting cultivation still plays an important role. Food gathering and hunting are the important subsidiaries. This is Konda Savaras. They are in northern Andhra. Basically, the tribal pockets of Andhra are in the region of Srisailam, which is bordering Odisha. And there is Chenchu tribes are concentrated in the districts of Krishna and below Krishna, I guess, somewhere over there. And most there are other tribes which are between the borders of Andhra and Telangana. I mean, where it is
जहाँ पे छत्तीसगढ़, where it is near to Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So there the tribal areas are also concentrated. So they were shifting cultivators, but हाँ, फिर आया Konda Reddy. These are like powerful tribes. I think you can hear, like, hear them mentioned in history, tribal uprisings also. So Khond uprising में Konda Reddy have played a important role. So inhabit on both the banks of Godavari River in the hilly forest region of Khammam district of Telangana and Srikakulam district of Andhra Pradesh. So they are in Khammam district of Telangana and Srikakulam district of Andhra Pradesh. They were shifting cultivators but adopted to settle agriculture and horticulture for their eco-friendly practices such as use of household articles made of bamboo, bottle gourd, and seed. आगे फिर wildlife in news. Then endemic to eastern Ghats of Andhra Pradesh are extreme southern Madhya Pradesh, found in the Jadans Cursor. This they've asked in previous question, okay? Because this is critically endangered also. Right. Jadans Cursor, this is in eastern Ghats of Andhra Pradesh and southern Madhya Pradesh, found in the thorny or scrub covered areas surrounding the eastern Ghats, currently known only from the Sri Lankamalleshwara Wildlife Sanctuary. ये Lankamalleshwara हमने देखा है. I think this is in Anantapur district. Anantapur is bordering Karnataka. Then threatened by the exploitation of scrub forest, livestock disturbance and quarrying. So IUCN status है critically endangered. फिर peacock parachute spider, known habitat is in degraded forest near Nandyala in Andhra Pradesh. Then recently it was spotted in cave in Pakkamalai reserves in Eastern Ghats near Jinji in Viluppuram district of Tamil Nadu. Jinji, Viluppuram district of Tamil Nadu. This is found. And also known as Guti tarantula. So is Guti by any chance Uti? वो एपी में क्यों होता? नहीं ये तो मतलब AP they are saying it is in Tamil Nadu region also, no? Let's move on. For endemic to India, Guti is a town in Andhra Pradesh. It's coming Anantapur district. Oh, okay. Anantapur, okay, fine. So South India's earliest Sanskrit inscription. Archaeological Survey of India has discovered Sanskrit inscription in Guntur district. Earliest Sanskrit inscription in South India as on date. Earliest epigraphic evidence of Saptamatrika cult so far. Then Saptamatrikas are a group of 7 female deities worshipped in Hinduism as personifying the energy of their respective consorts. So inscription is in Sanskrit and in Brahmi characters, issued by Satavahana king Vijaya in 207 AD. ये 7 और 8 भी हो चुकी है ना, 8 भी गिनते हैं ना पार्वती जी को मिला के. I have no idea at all. Okay. So basically Saptamatrika is 7 deities. So then I think broadly this Andhra region, Satavahana rule is famous, yes, right? Yes, Satavahana. Amaravati style of architecture. Correct. And Kakatiyas also have ruled, and Eastern Chalukyas also have ruled Andhra. And yeah, that's it. And Krishnadeva, Vijayanagara. So then red sanders, endemic to several districts in Andhra Pradesh and some parts of Tamil Nadu and Karnataka. Known for its therapeutic properties, it is high in demand across Asia, particularly in China and Japan, for use in cosmetics and medicinal products, as well as for making furniture, woodcraft, and musical instruments.
So listed in appendix 2 of sites. ये important है. Red Sand. Of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has revised export policy to permit the export of red sandals if it is obtained from cultivated land. Okay. फिर Tiger Triumph, India USA held their first tri-services exercise codenamed Tiger Triumph at Visakhapatnam and Kakinada in Andhra Pradesh. Only second time that India deployed its tri-services for an exercise with a foreign country after what is this? Indra War Games with Russia. So this is Tiger Triumph. It seems it's a tri-services exercise. So all the three services will be there. So then there is Disha Act. So Disha Act amends relevant provisions of Indian Penal Code 1860 and Code of Criminal Procedure Act 1973, envisages the completion of investigation in 7 days and trial in 14 working days, adequate conclusive evidence, and reducing total judgment to 21 days from existing 4 months. So basically, this Disha Act has come in the light of the rape case of the doctor in Telangana, if you remember. मतलब एनकाउंटर भी किया गया है उन तीनों को. So this act is in light of that, and so the main feature of this Disha Act is zero FIR. मतलब FIR की जरूरत नहीं है. So prescribed death penalty for rape crimes where there is adequate conclusive evidence. Their punishment for harassment of women through social media, special courts in every district in Andhra Pradesh, special police teams for investigation of offences related to women and children. Bill is yet to get President's consent. आंध्र प्रदेश का ये स्टेट एनिमल कौन सा है? State animal is black buck, I guess. हाँ, ब्लैक बक. And state bird is red parakeet. Red parakeet में red parakeet मतलब पैरेट है, लेकिन पैरेट के नेक के अराउंड एक रेड एक रेड कलर रिंग जैसा रहता है. That's red parrot. हाँ, parakeet. PARROKIT. तोते जैसा ही होता है. हाँ, PARAKEET. मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद. हो गया क्या? हाँ, then Durgi stone carvings were unique as they were sculpted in stone from soft limestone which is available only in Palnadu region. ये भी मतलब रायलसीमा में है, पलनाडु. And Etikopaka toys, ये रहा. Art of making traditional wooden Etikopaka toys, more than 400 years old. This is also known as turned wood lacquer craft. Turned wood lacquer craft. Wood used is from Ankudi Karra tree that is soft in nature. Toys are used in shape, unique in shape and form. Then ये तो हमें पता है, Banganapalli mango. It has GI tag. And fruits can retain their quality under cold storage. ये सब. Skin has very light spots. Stone is oblong. This is, what is this? Arlagadda stone carvings. Arlagadda, so stone carvings. Sculptures widely used sandstone called Isukarai. Isukarai means sandstone. Okay. And आलू होता है क्या? हाँ, आलू होता है क्या मतलब? मुझे नहीं पता है. Arlagadda, but there is a place called Arlagadda. I think Navya can tell. I particularly don't know where it is, Alagadda. But we have heard of it.
somewhere. Yes. So there is a place called Arlagadda. मतलब देखना पड़ेगा. कर्नूल में है. कर्नूल In में, yes. in Hindi also, algadda means potato. नहीं गड्ढा मतलब Actually, पिट In Karnataka, in Kannada, alugada means potato. Correct. okay, correct. we call algadda only. I Correct. got that. So, but this is Arlagadda. Then probably they might be producing them. Anyways, so sculptures widely used sandstone called Isukarai and Krishnasila stone or black stone called Pesararai in local language. Then Arlagadda strictly followed the ancient knowledge of Shilpa Shastra and in Vijayanagara style. So then Araku Valley, Arabica coffee. This is very important. They export coffee from here. So uniqueness is that it is organic and cultivated by Adivasi. Peculiar mix of climate in Araku, hot days and cool nights, coupled with naturally iron-rich soil, lends the Araku coffee body intensity and a rich aroma. Has demand across France, Sweden, Dubai, and Switzerland. तो ये कॉफी एक्सपोर्ट होता है. अरकू इज वेरी नियर टू विशाखापट्टनम, अरकू वैली. ये तो सबको पता होगा शायद. यस, वी आर डन. कांग्रेट्स. का स्टेट पीसीएस देना दीप्ति इस बार. हेलो. दिया है, मेंस हो गया. अरे वाह. नहीं पता चल मेंस हो रहा है गया मतलब मेंस में गया मेरा. काफी नॉलेज. Any other thing in news AP के बारे में कोई याद है? Any other thing apart from this? वो कुछ बुद्धिस्ट वो मिली थी ना, केव्स भी मिली थी, याद हो तो किसी को? आपने नहीं देखा बुद्धिस्ट. Some konda, I think, Buddhist site, right? बुद्धिस्ट रेलिक. कोंडा मतलब पहाड़ है. हाँ, करेक्ट, ये राइट. न्यूज़ मुझे नहीं पता. आई थिंक इफ यू टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट साइट, देन देयर इज बुद्धिस्ट साइट इन वेरी नियर टू विशाखापट्टनम, दैट इज बोज्जनकोंडा. ये नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है. पापीकोंडा. मैं वही सोच रही हूँ पढ़ाते वक्त. I think अभी मुझे पापीकोंडा माइंड में फिक्स हो गया. पापीकोंडा नेशनल पार्क, गोदावरी. दिस इज फिक्स नाउ. पापीकोंडा तो नहीं यहाँ पर है ना. कम डाउन. हाँ, पापीकोंडा इज द एरो सही लगाया क्या मैंने? नहीं ये था ना गोदावरी पे. ऊपर रहेगा. और इससे भी ऊपर? नहीं इसके ऊपर तो उड़ीसा निकल जाऊंगा ना. Polavaram project is built on Papikonda. Yeah. ना पोलावरम. Right. ऐसे नीचे गया. This Krishna Godavari Vamsadhara disputes are happening recently, so those Correct. rivers are important. Between Telangana and Andhra Pradesh, Krishna Godavari dispute is happening now. Okay. Let me ask one question, okay? India's first online waste exchange platform. ये कहाँ पर है? आंध्रा में होगा. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. मुझे नहीं पता था, बट जो टॉपिक चल रहा था उस हिसाब से. India's first online waste exchange platform है Andhra Pradesh, okay? So here they're trying to exchange waste in real time basis, it seems. I don't know how it is working, but news में था. ये भोपाल में भी तो क्लिनिक शुरू किया ई-वेस्ट के लिए. हाँ, ई-वेस्ट क्लिनिक. ठीक है, चलो एंड करते हैं. 11 बजे आप. परफेक्ट. Okay. Okay, thank you Deepthi. इंडेक्स पढ़ा था ना. No problem. Thank you guys. Thank you for giving me the opportunity. अरे लास्ट क्वेश्चन. लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल. आंध्रा है क्या? हाँ वही होगा, बता रहा हूँ. It is 6.6 kilometers and situated between Cherlopalli and Rapuru stations.
ओके, एक फेमस पर्सनालिटी बोलता हूँ आंध्रा से, पिंगली वेंकैया. ए व्हाई इज फेमस? He has designed the flag. फ्लैग के Indian लिए flag. फ्लैग. हाँ, राइट. ओके, ठीक है. तो Okay, कल Potti sorry, Sriramulu also he died for the for separate state. separate Andhra state. Correct, correct. So we named a district called Nellore district is renamed as Potti Sriramulu Nellore district. Okay, thank you. Bye bye. Okay then, bye bye. Take care. ये केस स्टडी करनी है क्या? अभी 12 बजे. Please, कर सकते हैं. you can be killed for this. करनी है क्या? मतलब कितने लोग हैं? तैयार हो सब? कल सुबह उठना I मुझे will 8 be बजे. there if you do. Amiable is saying happy birthday.